इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यू करते हुए हम आज जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। उसमें दो क्वेश्चंस थे, एक था ऑन एक्सियल लाइन और दूसरा था ऑन इक्वेटोरियल लाइन। और हमने दोनों में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज एज क्यूब ऑफ डिस्टेंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज एज क्यूब ऑफ डिस्टेंस इन केस ऑफ डाइपोल। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंट ही कुछ स्टडी करने वाले हैं। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्कस किया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल स्टडी किया। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ही अगर हम डाइपोल या चार्ज पार्टिकल को इंसर्ट करते हैं तो उससे क्या रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि इसमें हमने डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट किया। अब हम आज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को ही इंसर्ट करने वाले हैं या चार्ज पार्टिकल को ही इंसर्ट करने वाले हैं। तो उससे हमें क्या रिस्पांस मिलता है जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल या डाइपोल को हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो इसके नतीजे में आपके दो क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं कि एक तो है कि आप चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो उससे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाता है, वो मैंने पहले ही एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर। तो यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल को लेकर भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट कर देते हैं तो उस पर क्या असर पड़ जाता है। दूसरा है कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को इंसर्ट करते हैं तो वहां पे जो दो क्वेश्चन हमारे पास है, एक है टॉर्क का और एक है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और इस सब यूनिट के लिए जिसमें हमने डाइपोल पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ा, फिर उसमें एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पढ़ा, और इसी में एक दो क्वेश्चन है कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड में हम जब डाइपोल को डाल देते हैं तो डाइपोल पे क्या असर पड़ता है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलो हम इस पर सबसे ज्यादा ख्याल जो रखना है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का। तो हम चलते हैं कि सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज एक पॉजिटिव प्लेट है और यहां से ये पॉजिटिव है और यहां से ये नेगेटिव है। ऑब्वियसली अगर मैं यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रखता हूं जिसकी वेलोसिटी से u है या v0 है, सपोज अ चार्ज पार्टिकल हियर, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, ये फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। तो यहां पे चार्ज पार्टिकल है, हमें इंसर्ट करना है इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करेंगे, ऑब्वियसली यू नो दैट अगर ये चार्ज पार्टिकल है, से सपोज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ऑब्वियसली इसकी पाथ ऐसे होगी, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल को पुश ही करेगा बाहर। अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली यहां की तरफ जाएगा, जो मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया है। नाउ हमने चार्जर पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए और हम इसकी इस मैक्सिमम हाइट को भी स्टडी कर सकते हैं, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी स्टडी कर सकते हैं, और कितना दूर चला गया ये भी स्टडी कर सकते हैं, किस टाइम पे कौन सी लोकेशंस थी, किस टाइम पे किस जगह था, ये भी स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स से द इक्वेशन, so r is equal to ut plus 1/2 at square. It's like this equation, या आपने r ले लिया position at any time, position as a function of time, and y is equal to या s is equal to ut plus 1/2 at square भी ले सकता हूँ। That you know the equation of one dimensional motion for the position of the any particle, for position of any object as a function of time, that is ut is equal to 1/2 at square. तो मैंने यहां लिखा r is equal to ut plus 1/2 at square. सो जब पार्टिकल इसमें चला जाएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है that will create a force, there will be electric force, that's F is equal to E into Q. So you know F is equal to mass into acceleration, so you go EQ over M, you get the acceleration. So यहां पे जो acceleration मिलेगी that is A is equal to EQ over M. अब मुझे यहां पे दूसरी बात बोलनी है। पहले सपोज अगर मैं यहां पे रेफरेंस फ्रेम डाल रहा हूं, ये x एक्सिस है
and this is y axis, and suppose this is z axis. और मैंने पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस थ्रो किया और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के नीचे से, अगर यहां से जे वेक्टर जा रहा है ओब्वियसली यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग माइनस जे डायरेक्शन। यह ख्याल रखना है कि यहां पे अगर मैं रेफरेंस फ्रेम डाल रहा हूं जहां पे चार्ज पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, अगर मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस मार रहा हूं, इस लाइन को वाई एक्सिस मार रहा हूं, जे से जो पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक जो जे यहां से है वाई एक्सिस से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका उल्टा है नीचे की साइड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस जे डायरेक्शन, सो E इज इक्वल टू माइनस टाइम्स G, and electric field this velocity is V naught is equal to along I, that is V naught I, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है इसको। तो जब आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा F is equal to E into Q, that is minus J times, so this will be minus times E, and you know when you convert F is into MA is equal to EQ, magnitude के सूत्र में you get EQ over M, so instead of acceleration here this you get EQ by M, so the position at any instant will be UT into, it is along the minus J direction, that is minus times, so minus 1 by 2 EQ over M into T square. This is the equation of the position at any point of time. You will calculate in terms of when a particle is inserted or when a particle is placed in a uniform electric field. Then you can get the, say suppose if this is a length L, then I have to calculate the time T. This is one of the equation. It is similar if you this in projectile motion you have a y is equal to, or h is equal to ut minus 1 by 2 gt square. Instead of acceleration you have g there, but in case of electrostatics you have eq by m as an acceleration. So in mechanics you can write a in under acceleration to gravity when the object falls, you have against a you have g, but in case of electrostatic field when you place a particle in an electric field, instead of a you write eq over m. This is the equation that is representing the position of the particle in an electric field. Say suppose the plates have a length L and it takes time t. So how do we calculate the time t? So we know the velocity is equal to this distance over time, so t is equal to L over V naught. This V is the initial velocity that you can calculate. So similarly you can calculate also, you have you know in projectile motion, this same is projectile motion. So you have this height, you have this range, this L, so you have a R, calculate the maximum height, you calculate the maximum range, how long it goes to reach this plate, and calculate time, how long it takes the time to cover this much of distance. So in case of projectile motion, you know you have h is equal to, when you draw the object from some height h, when you drop an object at some height h, you get h is equal to 1 by 2 gt square. So instead of here you get h is equal to 1 by 2, instead of g you can write eq over m into t square. So this is the equation you can calculate, or you can calculate t is equal to 2hm divided by eq, or t is equal to under root of 2hm into eq. This is the time at any instant. Here it is related to the mass of the particle. The t is directly proportional to root of mass. So knowing the you have a different charged particle, you can have a proton, you can have an electron. Having different particles, you can calculate the time when you drop any charged particle in an electric field. These are the different, these are the response to electric field by the charged particle. When you place the charged particle in an electric field, what type of response you get, and what type of equations for the time of this, say you can see the time of flight, how long it is moving between the plates or between the electric field. You calculate that t, you can calculate h, and even you calculate the velocity. So this resembles with the same as when you drop the object under the influence of gravity. You have h is equal to 1 by 2 gt square. You have t is equal to under root of 2h by g. So instead of g,
you write here EQ over M. This is यहाँ पे G है, यहाँ पे सिर्फ variable H है. You can get the time at any instant. Knowing the height, you calculate the time. And here, knowing the mass and electric field charge of that the charge can be either electron, either proton, and you have a mass of electron and mass of proton, not the time T. So on the basis of these parameters, you can calculate so many conceptual questions that how it depends upon the different factors in terms of gravity. When you drop the object under the influence of gravity, what is the time equation for the height, or the equation for the position at any instant, and what is the position of this time and equation. And, different equations can be derived out of these very equations. And this one is the when you draw the charged particle in a uniform electric field. And knowing these x-axis, y-axis, knowing the direction of I, j, k, vectorially, if you are given any numerical, you can solve that easily. So let us now discuss about the dipole. The same thing, when you insert the dipole in an electric field, what happens? Suppose this is an electric field, extra electric field. So, but this is uniform external electric field. Dipole in uniform electric field. Equation of dipole, then you are calculating the torque. Equation for torque due to dipole when you place that in a uniform electric field. Say suppose this is a uniform electric field of strength E, and you have a dipole that you place here. This is a negative Q charge, this is here plus Q charge. Obviously, the electric field is moving from this direction to this. It will push this positive charged particle with a force F is equal to E into Q. Since the two charges have same magnitude, and it will push again this charged particle, this electric field will attract this negative charge along this direction with force F is equal to E into Q. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका जो फोर्स फील होगा वो F इज इक्वल टू E इंटू Q की सूरत में लिखना है, जहां भी आपका फोर्स हो. अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, इस F को MA में ब्रेक कर देना है, वहां से A निकालना है. So here the two forces are in opposite direction. If they are acting in the same line, अगर ये एक ही लाइन में, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहे हैं, the net force will be equal to 0. But since it is making some angle, so they are not acting in the same line, so they are definitely the torque will not be 0. Since the dipole is not acting, the forces experienced by these two charged particles does not act along the same line, so definitely there will be a torque. If they are acting along the same line, then net force is equal to 0. But since I have kept like this making angle theta with the direction of E, so they're not acting along the same line, hence this torque is not equal to 0, and we have to calculate the torque experienced by this dipole in a uniform electric field. And I told you this individual charge plus Q charge will experience a force F is equal to E into Q in this direction. This negative Q charge experiences a force along this direction. So the electric field is making angle theta with this, the dipole is making angle theta with this electric field. And here is the center O of dipole. It is up to A, it is A, separation is 2A. Now, if I calculate, I'm telling that here force along at this point is along this direction and force at this point is along this direction. Let me calculate the torque. That I said the torque cannot be equal to 0 here. Now to calculate the torque, I need to draw the perpendicular here. That force into this perpendicular distance, the least distance, gives me the torque at this very point. This theta and this A, suppose this is, I will draw another arrow. This is theta. I will take consideration this theta. This is the angle. This is 0, O, up to it's A, and it is A, this. Draw the perpendicular. So you have a from minus Q to plus Q,
dipole moment in this direction, and you have electric field in this direction. So you have E in this direction, and dipole, you know, inside dipole, negative Q to plus Q, your dipole moves from negative to P. Negative Q to plus Q is the direction of dipole moment. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है along the x-axis. If I treat it at along x-axis EI, I don't have a dipole moment, direction of dipole moment. In order to make the solution in a vector form, I need another vector. That's the dipole vector, dipole moment vector. The dipole moment vector is from minus q to plus q. That's in this direction. That's I have shown in dotted line. So this dipole P is making an angle theta with electric field E. I can repeat it. This is minus q charge plus q charge, and this is direction of electric field E. So I need a vector, another vector to solve the effect of electric field on this dipole. So I draw the line. This is an x-axis showing the direction of minus q to plus q, direction of dipole moment P. So this dipole P, this arrow is making angle theta with E. Now, how I can calculate the effect of this electric field on this very point P? Let me draw the perpendicular line. This that I have shown here, this is O, suppose this A, this is B, and this is up to here is A. Distance from the center to one of the charge. So when I calculate the torque at this very point, the force or the torque produced at this very point, then I can calculate this actually like this. That is equal to force into perpendicular distance that I represented as A, B. There's A, B, and O. There's F into AB. From this same triangle, I can take perpendicular AB divided by this hypotenuse A gives me this sine theta. So AB comes out to be equal to A sine theta. So the torque comes out to be equal to, torque will be F, that's E into Q, into AB is a perpendicular distance, that's AB is A sine theta. This is the torque on this charge. Similarly, for drawing the perpendicular from this very point, you have another triangle this, because इफेक्ट इस चार्ज पे भी है, इस साइड में फोर्स का, इसमें भी इस साइड इफेक्ट है. सो यहां से एक फोर्स हो रहा है, यहां से अलग फोर्स हो रहा है. तो यहां पे जो लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस बिकम्स हाइपोटेन्यूज ए एंड कैलकुलेट दिस थीटा. You get another torque. So this is one of the torque on this charge, is another torque force produced on this charge. Then you have 2 times torque is equal to 2 times EQ into A sine theta. One of this triangle, one of this line, action of line this, and another due to this line of action. This is the, so you get the total torque 2 times EQ into A sine theta. But I have drawn it, just draw it in a bigger form. And this is one of this triangle, and this another form of triangle. Then I take twice this EQ into A sine theta. So when you calculate this, you get torque is equal to E into 2AQ into sine theta. This 2AQ is the dipole moment that I was talking about. Separation between the distances, separation of the two charges, 2A in the magnitude of either charge. So torque comes out to be equal to E into P sine theta. This is the angle of sine between the electric field vector E and dipole moment vector P. So this their electric field E और vector P का एंगल ही आप डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क को रोटेट होना है. सो देयर विल बी अ क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज रोटेशन में आपको क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए. सो टॉर्क इज इक्वल टू E क्रॉस P, बिकॉज in case of cross product, you have a rotation. There's a sign represents the cross product between E and P. So torque is equal to E into P. This is the equation for the dipole. When this equation for the torque experienced by this dipole when placed in a uniform electric field, and this torque produced depends upon the angle between this dipole vector and the electric field vector. So here are special cases. So torque is equal to EP into
sin theta, you have, if theta is equal to 0 degree, your torque is equal to 0. Means, it means अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होगी को डाइपोल को अपने हिसाब से अलाइन कर ले। ये डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये इसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलाइन करेगा, क्योंकि माइनस क्यू तो प्लस क्यू आपका पी निकल जाएगा, वो यहां से होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू ई, सो द टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। सो टॉर्क के लिए आपका मिनिमम टॉर्क, अगर मिनिमम एंगल होगा 0 एंगल, पी वेक्टर और ई वेक्टर के दरमियान 0 डिग्री एंगल होगा, आपका कोई टॉर्क काम नहीं करेगा। जितना एंगल बढ़ जाएगा आपका टॉर्क उतना काम करना शुरू हो जाएगा। So if theta is, suppose if theta is 30 degree and sin 30 is 1 by 2, so you get torque is equal to EP into 1 by 2, that is torque is equal to EP by 2. Suppose if you take theta equal to, say suppose 90 degree, you get torque is equal to EP into sin 90, as torque is equal to E into P's maximum. If you take torque is, जितना आप एंगल बनाएंगे देखते हैं टॉर्क क्या होगा। If you take theta at 180 डिग्री, इसका मतलब है डाइपोल बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ से है, पॉजिटिव के चार यहाँ से है, नेगेटिव को यहाँ से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है डाइपोल, यानी कि इस समय पॉजिटिव यहाँ पे है और नेगेटिव यहाँ पे है, तो डाइपोल मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, एंगल में 180 डिग्री। एट दैट वेरी टाइम योर टॉर्क विल बी इक्वल टू EP into sin 180 degree, and sin 180 degree is 0, so you get torque is equal to EP, that is into 0, that is equal to 0. अगर आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री एंगल बनाता है तब भी टॉर्क 0 होगा, अगर वो 0 डिग्री बना रहा है तब भी वो टॉर्क 0 ही होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम एट 90, टॉर्क इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री, और टॉर्क हाफ होना चाहिए था 45 पे, लेकिन टॉर्क हाफ है 30 डिग्री पे। ये भी एक खास पॉइंट है कि टॉर्क जो हाफ जो है, टॉर्क का हाफ वैल्यू जो है वो एट 30 डिग्री है। एज पर हम अगर कन्वेंशन से देखेंगे तो 45 पे हाफ होना चाहिए, लेकिन 45 हो, अगर हम एंगल को आगे के लिए चलते हैं 30, फिर 45, फिर 60, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा और 90 पे ये मैक्सिमम पहुंचेगा, लेकिन 30 पे ये 1/2 ऑफ E into P मैक्सिमम बोलता है। एट 30 डिग्री योर टॉर्क विल बी हाफ ऑफ द टोटल टॉर्क एट व्हिच द वैल्यू इट शुड हैव एट 90 डिग्री। सो ये है टॉर्क। सो टॉर्क इज इक्वल टू E into P into sin of theta. When you place the dipole in a uniform electric field, it will experience a torque, but the torque experienced by this dipole depends upon the angle between the electric dipole moment P and electric field E. As you said that torque comes out to be equal to E into P into sin theta. So P comes out to be equal to torque divided E into sin theta. If electric field is F by Q, that is 1 Newton per coulomb. If I say electric field is 1 Newton per coulomb, the electric field, and theta is equal to 90 degree. This angle between E and P, if E is in this direction and P is in direction, angle is 90 degree, then P is equal to torque. Hence, तो डाइपोल मोमेंट हम बोलते थे अब तक, डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली द टॉर्क experienced by the dipole when the electric field and P possess an angle of 90 degree. जब आप एक डाइपोल को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल तब मैक्सिमम होगा जब आपका डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा, दिस माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E and this is direction of P. So they are making an angle 90 degree.
when E and P are 90 degree and you are applying the electric field 1 Newton per coulomb, that time the torque experienced by the dipole is known as this electric dipole moment. So electric dipole moment is numerically equal to the torque experienced by a dipole when placed in a uniform electric field, making an angle 90 degree with the external electric field. Or you can write it here, E2 into 2A sine theta is equal to torque. You can also find the torque for the numerical purpose. You can have a different value for this, and this. You can calculate the torque. So now let us move further. Suppose this is an electric field now. And this is the dipole. This is dipole, this O and this A, and this dipole placed in an electric field E. This is making angle theta. Since the electric field has a tendency to bring this dipole to disturbed state, इसकी टेंडेंसी ये है कि इस डाइपोल को ये अलाइन करेगा अपने ही डायरेक्शन में, यानी कि इसकी टेंडेंसी है इस डाइपोल को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है इसको इस तरह अलाइन करने की कोशिश करेगा। माइनस क्यू चार्ज, इस प्लस को चार्ज, यहां से पी वेक्टर होगा। सो ई और पी पैरेलल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी को पैरेलल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम टॉर्क की बात कर रहे हैं विद इंक्रीजिंग एंगल, योर टॉर्क इंक्रीज अप टू 90 एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडेंसी टू ब्रिंग बैक टू इट्स स्टेबल पोजीशन, इसको वापस करने की कोशिश कर रहा है। दैट मींस एट सम एंगल दिस डाइपोल पॉसेस सम एनर्जी एज एन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर आपका ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पे है इस तरह, या आपका स्ट्रिंग है, आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, ऑब्वियसली व्हेन इट गेट्स स्ट्रेच it has a tendency to restore its position. So you have a restoring force here which tries to bring it back to its equilibrium position. Similarly यहाँ पे equilibrium position ये है डाइपोल की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ अलाइन करना चाहता है, but it has moved at some angle. That means there is some restoring torque that tries to bring it back to its equilibrium position. So this torque contains a potential energy. Now to calculate that very potential energy or the work dW or du, and we know du is a function of distance. The potential energy is dF by dx, or du by dx is a function of a position. But here we have an angular displacement. हम इसको रोटेट करना चाहेंगे यहां से ऐसे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको इस एंगल से लेकर यहां तक लेना चाहेंगे जहां पे डाइपोल 90 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। क्योंकि डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है, टॉर्क मैक्सिमम होगा। उस टॉर्क पे फिर वहां से हम इलेक्ट्रिक दिस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। सो फॉर पोटेंशियल एनर्जी यू हैव इक्वेशन dW इज इक्वल टू टॉर्क d थीटा, बिकॉज इट इज you can write the work done in case of translation motion. You write dW is equal to F into dx. So here in case of rotational motion you have against F you have a torque, and against dx you have angular displacement. So यहां पे जब ये डाइपोल at 90 पे होगा, when it will be at 90 degree, it will have a maximum torque, minus q plus q, this O. So from this very
अब यहां से हम इसके अंदर कितनी पोटेंशियल उस समय होगी, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी है इसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना, इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को एग्जीक्यूट करवाना, ताकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। लेकिन चूंकि ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, पी ई के साथ 90 डिग्री बना रहा है इसके अंदर, इसका मतलब है इसके अंदर यहाँ पे एनर्जी है और वो एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसका लिमिट वैल्यू जो होगा, तो इन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू फ्रॉम 90, क्यों 90 पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, टू एनी एंगल टॉर्क डी थीटा. So you take the torque from the 90 degree, because at 90 degree the torque have a maximum value, to some angle theta, to calculate its potential energy stored in this dipole when you are moving it against the electric field E. जब भी आप ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे हो, you have to put in some energy, और उस बॉडी के अंदर वो एनर्जी एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है in terms of mgh when you lift an object from the surface of earth. So obviously you took energy at certain height, your energy is here mgh. सिमिलरली यहां भी आप डाइपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी आती है वो हमें कैलकुलेट करना है एज एन पोटेंशियल एनर्जी. सो W विल बी इक्वल टू, दैट्स कॉल्ड U आल्सो, is equal to from pi by 2 to theta, and tau you have calculated, tau comes out to be PE sin theta, that is P into E into sin theta into d theta. So you can U comes out to be equal to P into E integral from pi by 2 theta sin theta d theta. So U comes out to be equal to P into E, sin is minus cos, minus यहाँ निकल जाएगा, cos theta from pi by 2 to theta. On substituting the values, you get U comes out to be equal to P into E minus times P into E cos theta minus cos pi by 2, and cos pi by 2 is 0, so you get U comes out to be minus P into E into cos theta, so you get U is equal to minus P dot E or E dot P. So E dot P. This is the expression for the potential energy experienced, or potential energy due to dipole when placed in an external electric uniform electric field and possessing some energy in terms of potential energy. So let us discuss now this negative quantity and other factors related to this and the graphical representation. So we can remember it like this, that the cross product between E and P gives you a torque, and the dot product between E and P gives you a potential energy. So you get torque is equal to E cross P, while as you get potential energy is equal to E dot P, the negative potential. And I discussed here that the potential energy is function of distance. Potential is function of distance. Here in case of rotational motion, when you have angular displacement, potential energy is function of theta. So that this U is function of theta. So I can write this EP into sine theta, and this EP cos theta minus EP cos theta. Negative sign means it has a zero. Negative means it is a less energy, means it is in a stable state. Now how it can be graphically represented like this? When theta is 0, you have equal to U comes out to be minus EP into cos 0 degree. Cos 0 is minus, cos 0 is 1, cos 0 is 1.
So you get U is equal to minus EP. So this, if this is energy U, and in this axis theta, so you have this energy EP when theta is 0. This is negative energy state. It can be shown like this. It can be shown like this. This is electric field. आपका जो डाइपोल है that makes an angle 0 degree. This is plus Q charge, this is minus Q charge. P इसी डायरेक्शन में है और E भी इसी डायरेक्शन में है. You have minimum potential energy is negative. Minus Q है. At when theta is 0, you have a minimum potential energy. As soon as you increase the angle, as soon as you enhance the angle between dipole and this is P and this is E, your energy goes like this. At some theta, you reach at this very point. Suppose at 90, it is minus Q, this is plus Q. Here, this is the direction of P and this is the direction of E. You have a now 90 degree between E and P. Your U comes out to be equal to 0. So energy will be now here 0 on x-axis. Here, theta is 0. You have negative energy. Minimum energy means stable position. This is aligning to the direction of electric field. Now, I change its angle from 0 to 90 degree. Your energy becomes 0, potential energy becomes 0 by the torque maximum. यहाँ पे torque maximum है. At 90 degree torque maximum, but potential energy is 0. That is why I take the lower limit pi by 2 to theta. क्योंकि यहाँ से potential energy होना शुरू हो जाएगा. So when you move further in this direction, from this to this, when you rotate it, you rotate it like this. This is another point. Here you have a maximum potential energy. You have maximum potential energy. Here you have a minimum potential energy. And here you have a zero potential energy. This can be seen here if theta is equal to 180 degree. Here U is 0 when theta was 90. Now theta is 180 degree. Your U comes out to be equal to minus EP cos 180 degree. Cos 180 is minus 1, that minus 1 and this minus plus. So U is equal to EP plus. So this is the EP plus. यहां पे जो तीन स्टेट ऐसे एग्जिस्ट होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E है, और यहां पे जो डाइपोल होगा वो ऐसे होगा प्लस Q माइनस Q, और डाइपोल P will be parallel to E. Theta is equal to 0. You have an energy, you have a potential energy U is equal to minus times EP. आप इस पोजीशन पे हो, स्टेबल पोजीशन पे. It's called stable equilibrium. क्योंकि डाइपोल ने अपने आप को अलाइन किया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. Now you take it. Dipole is 90 degree plus Q minus Q. Yeah, by making this is P now, and it's E making a 90 degree. This is point this x एक्सिस है जहां पे थीटा का वैल्यू है, एनर्जी ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है, पॉइंट यहां पे है. नो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 0 एट दिस केस. U नेगेटिव स्टेट में, मिनिमम स्टेबल स्टेट में है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0. नाउ when you put dipole again is electric field direction of electric field. अब dipole ऐसे हैं, यहां पे माइनस Q है, अब प्लस Q यहां पे है, इसके अगेंस्ट है. यहां प्लस Q था, माइनस Q था, अब ये इतना उल्टा हो गया ऐसे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होगी इसको वापस लाना इतने डायरेक्शन में एट रोटेशन ऑफ 180 डिग्री. सो ये था 0 डिग्री एंगल, दिस वाज 90, दिस इज 180 डिग्री. दिस इज 0 डिग्री, 90 पे यहां होगा, 180 पे यहां होगा. इसका मतलब ये और ये आपस में 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं. यहां पे मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है.
दिस इज, इसका मतलब है डाइपोल जो है माइनस प्लस टू क्यू, डाइपोल की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट आपस में 180 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब है डाइपोल अनस्टेबल है और अगर हम मामूली से रोटेट करेंगे तो वो फ्लिप करेगा, फ्लिप इनटू द डायरेक्शन, वो यहां से फ्लिप यहां पे करेगा। हर एक डाइपोल की टेंडेंसी है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से बैठना चाहता है। थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, यहां पे ये अनस्टेबल है और यहां पे स्टेबल है, यहां पे इसे थोड़ी एनर्जी मिल जाए डाइपोल को तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लिप करके इस डायरेक्शन में लगाएगा, माइनस क्यू टू प्लस क्यू लगाएगा, अलाइन करेगा अपने हिसाब से। तो जब ये इस डायरेक्शन में, फ्रॉम इस डाइपोल का डायरेक्शन ये प्लस क्यू इस साइड से, माइनस क्यू इस साइड से, उस समय डाइपोल के अंदर काफी एनर्जी है एज टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब माइनस क्यू यहाँ पे, प्लस क्यू यहाँ पे, उस समय मिनिमम लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी है। दिस इज अ स्टेबल स्टेट एंड दिस इज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। This is stable equilibrium and this is theta is 0. You don't have any potential energy in the dipole. यहां पे टॉर्क मैक्सिमम होगा and it will start now going towards either maximum potential energy or to minimum potential energy. This charged particle will oscillate from minimum potential energy to maximum potential energy, from maximum potential energy to minimum potential energy, and here it is an unstable equilibrium. This is stable equilibrium, sorry, and this is unstable equilibrium. So the oscillation of the charged particle, oscillation of the dipole in electric field will be from maximum to minimum. The oscillation of the dipole in electric field will be from maximum potential energy to minimum potential energy, from minimum potential energy to maximum potential energy. This oscillation is called a torque that changes its value from maximum to minimum. So here we have a word that P into E is maximum. So it means here the differentiation of potential energy with respect to theta will be equal to 0, and also here the differentiation of minus times the theta will also be equal to 0. So the term, when you get the maximum and minimum term, you have to calculate the potential energy. When you get the maximum term, you can treat it du by deta equal to 0, and you can take the value of u and then calculate the potential energy. And at these 2 points, this point and this point, the potential energy will, the maximum potential energy will be equal to 0. Differentiation at this point will be equal to 0 at this and at this, and the potential energy varying from this to this and this to this. Here the potential energy is unstable state and here it has a tendency. इसका मतलब ये भी है कि अगर हमने डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड को, दिस डाइपोल डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को डाल दिया, अगर हम थोड़ा इसको डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा ही डिस्टर्ब करेंगे, इट विल रैटल, या ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर हमने इसको इस डायरेक्शन में ले लिया, यानी कि प्लस यहां आया, माइनस क्यू यहां आया, तो फिर यहां पे ये अनस्टेबल है। थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने से क्या होगा, ये फ्लिप करेगा, अपनी जगह वापस आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम इसको दिस माइनस क्यू, दिस प्लस क्यू, यहां पे थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। हियर इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, but at this very it is completely at unstable position. यहाँ से सीधे डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में 180 डिग्री एंगल का फर्क है, ये वाला 90 डिग्री एंगल है। दिस इज फ्लक्चुएशन ऑफ 90 डिग्री, दिस फ्लक्चुएशन ऑफ 90 डिग्री। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी at this very point, and change in potential energy at this point is 0. This means the maximum potential energy, and change in potential energy at that point is 0. It means the minimum potential energy. This is a graphical representation of the potential energy of dipole when placed in an external electric field. And similarly, you have a torque experienced by the dipole when placed in the electric field. This torque is actually the oscillation from minimum potential energy to maximum potential energy, and from maximum potential energy to minimum. Thank you very much.